हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे जो लैंड रिसोर्स है अब इंडिया में। लैंड इज द फंक्शनल नेचुरल एसेट ऑफ द survival and success of the mankind and for the support of every earthhood biological community. All land resource are फाइंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारे उत्तरी गोलार्ध हैं, लगभग 68%, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड रिसोर्स जो है 32%। इसको आपको जानना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड रिसोर्स आर यूज ऑफ द ग्रेजिंग लैंड है। हमारे पूरे विश्व में हम इस लैंड रिसोर्स के बिना हम रह नहीं सकते और हमारे धरती के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो आज इस वीडियो में हम सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि लैंड रिसोर्स के क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है लैंड रिसोर्स जो है हमारे भारत में। बेसिकली ये storehouse of the wealth of people, community, or a group, and produce the sustains there the fiber and the biotic material for the human utilize. It is very important, and also provision of natural environments for the plant, for the creature, the small scale life form, and also regulation of the capacity and steam surface water and groundwater, and also a provision of the physical space for the settlement, industry, division, स्टोरेज सिक्योरिटी। हमारे सारी चीज जो है इस धरातल के ऊपर है, इस धरती के ऊपर है। और मिट्टियों में अगर संरचना में अच्छी है तो वहां पे अच्छा फसल होगी। अगर एलुवियल सॉइल ओल्ड है तो वो बहुत ही फर्टाइल होगी। अगर हम सेंट्रल इंडिया बात करें जहाँ पे लेटराइट देखने को मिल रही है, जहाँ पे मिनरल्स पा जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लैंड रिसोर्स के जो इंपॉर्टेंस है और एनेबलिंग द development of the creature and plant and individual between the region and another region, land is very important for us। तो हमारे भारत में इतना अच्छा भूमि के कारण हमारे भारत इतना एग्रीकल्चर बेस हमें मिलती है। और हम सीधा बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन डिपेंड द heavily on the land since they live there and use to meet the majority of their requirements। यहाँ पे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लैंड रिसोर्स ऑफ द लैंड आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये जो इंपॉर्टेंस में आपको बात कर बोलना है। एंड द यूज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लैंड रिसोर्स आर बेस्ड ऑन फैक्टर एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें सम द अनस्टेब्ड रिसोर्सेज, जैसे कि बहुत सारे हमारे धरातल में बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। या ग्राउंड वाटर की बात करें, हर जगह में ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं है। पीने योग्य पानी कहीं पे है तो कहीं पे खराब पानी है। कहीं पे अच्छा मिनरल्स पाए जाते हैं तो कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क अगर बात करें, माइनिंग की बात करें, टूरिस्ट डिजाइनेशन की बात करें, टाउन की बात करें, एंड अदर टाइप ऑफ द लैंड रिसोर्स की बात करें, इन एडिशनल लैंड यूजेस वेरियस अक्रॉस द टाइम अमंग द रीजन। पूरे विश्व में अगर देखें तो ये देखने को मिल रही है। द यूज ऑफ लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ नेचुरल वेरिएबल लाइक द टोपोग्राफी, यहाँ पे धरातलीय संरचनाएं, आपका मृदा जो सॉइल एंड क्लाइमेट, एज वेल एज बाय ह्यूमन फैक्टर लाइक द पॉपुलेशन डेंसिटी, आपका लेंथ ऑफ ऑक्यूपेशन, आपका tenure of the land, and also the technical proficiency of the populaces. Very interesting. There are the because of physical and human elements that continue to interact. There are the regional and temporal variants, and also in how land is used. And although India, the land area is approximately 328.73 million hectare, and statistical data their land use were only available for 305 अर्थात 305 मिलियन हेक्टर 2010-11 का जो रिकॉर्ड है। और डाइवर्स जियोग्राफी इंडिया हैज द वैरायटी ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। तो हम लैंड यूज पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे। एक्चुअली मैं इस तरह स्लाइड आपके सामने रखने का यही मकसद है कि आपको कई बार नोट्स नहीं मिलती हैं, क्या लिखेंगे। तो सारी नोट्स के साथ हम आपको बता रहे हैं, सारी मटेरियल के साथ बता रहा है जो हमने खुद की लिखी हुई है, और ताकि आपको दिक्कत ना हो और ये जो है आपको काफी यूपीएससी में मदद मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अगर हमारे भारत में जो लैंड यूज पैटर्न है उसके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे कि यहाँ पे
बैरन लैंड भी दिखता है, बिल्ड अप लैंड दिखता है, क्रॉप लैंड दिखता है, डेसिडियस फॉरेस्ट लैंड दिखता है, फेलो लैंड दिखता है, आपका वेस्ट लैंड दिखता है, वाटर बॉडीज दिखता है, बहुत सारे जो है प्लांटेशन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, मैनग्रोव, ग्रास लैंड, ये सारी जो हमारे भारत के लैंड यूज पैटर्न के हम सीधा डिटेल जो है आपको जानकारी हम देंगे, ताकि आपको इस वीडियो में सीधा आपको लाभ मिले। और हमने जो पहले ही बताया कि आज लैंड रिसोर्स और आपका जो फॉरेस्ट जो है, वनस्पति के बारे में हम सीधा यहाँ पे जानकारी लेंगे और आपको सीधा हम बताएंगे। चलिए एक एक करके आपको हम बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे भूमि उपयोग के यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, नेट सून एरिया इज लगभग 46% of the total geographical area because of the extensive availability of the flat terrain in India. About 22% area country is under the forest cover. आपका barren and uncultivable wasteland amount the about 8.5%, and about 5.5 is under non-agricultural uses like the house, industry, and rest of area is under the tree crops and groves, permanent pasture and grazing land. There are the very important the net soon area, they are 46% of the total area, ये आपको याद रखना है। नेट सून एरिया की अगर बात करें, यहाँ पे मैंने जो बोल रहा था 46% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लैट टेरेन इन इंडिया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊं, इसके बाद नेट सून एरिया इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द लैंड यूज फॉर प्लांटेशन, अर्थात नेट सून एरिया इज द एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर planting and harvesting crops. And in an agriculture nation like the India, where this type of the terrain is crucial to the agriculture output, and this area has special significance, and net soon area increased from the 118.7 million hectare area, and between there are the decadal change, they are 1950 to 51 they are 141 million, and 2010 which was the extremely same, it is the 2000 and 2001 before the late of 19 when it was the showing steady increase, they are reduced in the net soon area of the relative recent phenomena, ये जो आपको देखने को मिल रही है। साथ ही के साथ बिटवीन 1951 एंड 2001-12 की जो अमाउंट ऑफ दैट वाज कल्टिवेटेड पर पर्सन डिक्रीज द dramatically from 0.5 hectare to 0.11 hectare also. And very interesting, there are the points, it should be reminded that the ratio of net soon area, यहाँ पे आपका ये जो रेशियो है नेट सून एरिया के जो रेशियो है आर द टोटल रिपोर्टिंग एरिया रेदर देन द टोटल नेट सून एरिया determine how prosperous in the agricultural sector, and the ratio of net soon area to total period area varies significantly from the state to state. The largest percentage where the Punjab and where the Haryana, and also there are the respectively percentage according to 82.6% and 80.5% respectively. And with the percentage there are the Arunachal Pradesh. ये आपको याद रखना है। And net soon area more than once की अगर बात करें, there are the different category also, as the name the suggest, more the crops growing here at the each year, and also it's make up the 16.6। क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए आपको दिए कि आपको लिखने में एग्जाम में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे हमने टेक्सचुअल जो आपको दे रहे हैं ये सीधा आपको दे रहे हैं, ये आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगी। And it make up the 16.6% of the total reporting area and 34.3% of the net soon area. It is the evident that percentage of area some in more than relatively low in India, and this sort region consist of land with the rich fertile soil and the renewable supply of the water. And infertile soil, a lack of precipitation and the poor application of the manure and fertilizer are blamed for this. Basically हमें वो मिट्टी अच्छा लगता है जहाँ पे हम पानी जो इकट्ठा हो सके
और हम खेती कर सके। और हमारे भारत में बहुत सारे एरिया जो कि यहाँ पे मेकअप लगभग रिपोर्टिंग दिस एरिया 34% ऑफ द नेट जोन एरिया जो है यहाँ पे। And this kind of land is particularly important since the particularly all the arable land has already been plugged. Basically, the only way to boost agriculture and productivity is to intensify cropping, and which can be accomplished by the increasing the area, that is the solve the multiple times. And a significant portion of the endogenetic plant जो हमारे भारत के इंडो जेनेटिक अर्थात जो गंगा के मैदान क्षेत्र है, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार एंड कोस्टल एरिया की अगर बात करें, जो मोर नेट सूड एरिया यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडो जेनेटिक प्लान हैज बीन सून मोर देन वंस इन द स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कोस्टल एरिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट लैंड। अगर लैंड रिसोर्स की बात करें तो फॉरेस्ट रिसोर्स को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पे लैंड जो लैंड यूज पैटर्न में जहाँ पे जमीन में फॉरेस्ट देखने को मिल रही है, इट इज द क्यूरियल टू कीप इन द माइंड दैट एरिया दैट इज द एक्चुअली कवर्ड इन ट्रीज। जो एरिया है कवर्ड विथ ट्रीज में है एंड डिफरेंट फ्रॉम द रीजन दैट इज द डिजाइन एज ए फॉरेस्ट। हमारे पृथ्वी में बहुत सारी जगह है जहाँ पे खाली लैंड है, मैदान क्षेत्र है, कृषि हो रही है, कहीं पे आपका जंगल देखने को मिल रही है, कहीं पे लैंड यूज पैटर्न में फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वो फॉरेस्ट लैंड के बारे में आपको लैंड रिसोर्स में जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। द गवर्नमेंट हैज डिजाइन एंड द क्लासिफाइड द लेटर एज द रीजन ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट रीजन है उसको फॉरेस्ट के ग्रोथ के अनुसार उसको विभाजित किए हैं कि कहाँ पे जंगल ज्यादा देखने को मिल रही है, डेसिडियास है, कहाँ पे एवरग्रीन है, क्या सेमी डेसिडियास है कि या कोल्ड रीजन वाला है डेसिडियास। आपका वेराइटीज ऑफ द land revenue records. As a result, this category might rise without the actual amount of forest cover doing so. So it is let us very important the area cover the forest. Basically कितने प्रतिशत एरिया जो है फॉरेस्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम द 40.41 मिलियन हेक्टर जो कि 1950-51 में एंड 269 मिलियन हेक्टर इन द 2000। ताले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है कहीं ना कहीं हमारा अच्छा है। द एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एंड द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट आईएसएफआर के 2019 के जो एस्टिमेट रिपोर्ट है, द कंट्री टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया आपका ये स्क्वायर किलोमीटर है 7,12,000 आपका 249 स्क्वायर किमी और 21.6% एरिया ऑफ द टोटल लैंड एरिया जो है वो जंगल है, फॉरेस्ट है। इट इज द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम के लिए अच्छा होगी। इन टोटल ट्रीज एंड फॉरेस्ट कवर 24.56% of the land area and it was the 24.39 in the most recent evolution, but for the tropical nation and like the India, whereas around the 33% of the total lands and should be converted by the forest, and also 24.39% also reporting the area forest is insufficient, and for the enormous tree plantation operation and also there are the careless tree cutting। आपका जो सिक्योरिटी के भाव में कई सारा प्लांट कटिंग हो रहा है और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ गैप कहीं ना कहीं मिल रही है। रेदर देन द इंक्रीज द एक्चुअल फॉरेस्ट एंड कवर द राइज इन द delimit area under the forest might be used explain in the increase in the fraction of the land covered by the forest. So another issue is very important, the land not available for cultivation. It is very interesting, land food to non-agricultural uses, you know, there are the land put to non-agricultural person is the category। दो भाग में इसको डिवाइड किया जाता है, land not available for cultivation बेसिकली जहां पे बेरेन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट एंड जहां पे लैंड फूड एंड द नॉन एग्रीकल्चरल यूज, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि लैंड फूड टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। बेसिकली दिस कैटेगरी इंक्लूड द लैंड यूजेस फॉर द कम्युनिटीज
रूरल ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, कैनेल, आपका बिजनेस एंड अदर यूजेस आल्सो, एंड दे and the area used for non agricultural pasture is where the rate of growth is highest, and this is because of the how the Indian economy is changing and how the expansion of the laying infrastructure facilities and the involvement of the industrial and service sector are becoming more and more important. It is very important, and the development has also been added by increase the area covered by the settlement, both the urban and rural. As a result, wasteland and agricultural land and are the display by the area use the non-agricultural purpose, such as the state Rajasthan, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, and Bihar. The state most of the land category, followed by the Andhra Pradesh, also the land food non-agricultural uses. हमें पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में भी नहीं, पूरे विश्व में इस तरह लैंड जो है देखने को मिलते हैं. दिस कैटेगरी include the land use for communities. They are rural and urban. Next, another slide. There are the barren and uncultivable waste. It is very interesting land use and pattern of the India. And with current technology, it is typically impossible to cultivate land. Basically, हमने वीडियो में नोट्स के जरिए आपको हम बताना चाह रहे हैं, और ये साइट आपको डायरेक्ट इंटरनेट में ये मटेरियल भी आपको नहीं मिलेगी. ये जो है आपको सीधा आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप नोट्स भी बना लें, एग्जाम के लिए तैयारी भी कर ले. जो यूजी पीजी के विद्यार्थी हैं और जो एनटीए नेट दे रहा है उसके लिए लाइन बाय लाइन जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वेस्टलैंड आर कल्चरेबल वेस्टलैंड and have seen a drop throughout time as the pressure on the land rose from the both agriculture and non-agricultural sector. जो हमारे barren land है, uncultivable waste जो है, यहाँ पे टिपिकली इम्पॉसिबल टू कल्टिवेट लैंड, हमें खेती करने के लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है. और वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है देखने को मिल रहे हैं ड्रॉप थ्रू आउट द टाइम बाय टाइम. यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ दूसरे काम में यूज किया जा रहा है. क्या हम एग्रीकल्चर बनाने के लायक कराने के लिए कोशिश हम नहीं कर रहे हैं. दैट इज द बिग इशू. एंड द फ्रॉम 1950 to 51 when the data were the first made available until the 2010 2011, the size of this land in the 1999 and 2000 it made up लगभग 13.8% of the total reporting area, जहां पे राजस्थान, जहां पे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश and Bihar are the other state with the biggest amount this type of land, and also Andhra Pradesh and which has the large amount. आंध्र प्रदेश का अगर बात करें इस प्रकार जो भूमि ज्यादा है. नेक्स्ट हम अनदर बात करेंगे परमानेंट पश्चियर के बारे में, जो कि एंड अदर ग्रेजिंग लैंड. बेसिकली यहाँ पे हमारे भारत में अगर प्लेटो रीजियन में अगर जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है परमानेंट पश्चियर एंड द ग्रेजिंग लैंड, जो कि काफी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिल रही है. यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ टोटल ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि पंचायत एंड प्रोसेस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड, a very minor amount of this land is owned privately, and this village of panchayat and land is classified the common property resource. इसको याद रखेंगे, दिस टाइप जो लैंड है उसको क्या बोला जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. इसको याद रखेंगे, दिस विलेज panchayat land is classified the common property resource. The total area of the permanent pasture and the other grazing land लगभग 10.3 million hectare. ये तो गवर्नमेंट और कम्युनिटी पंचायत जो है इसको डेवलप कर रही है मेजोरिटी इन दिस टाइप ऑफ लैंड, जहां पे ये प्रायोरिटी दिया जा रहा है रिसोर्स को, मृदाओं को, मिट्टियों को. एंड दिस रिसोर्स अराउंड द 4% ऑफ द टोटल नेशन ओवरऑल, रिपोर्टिंग द ग्रेजिंग ऑकरिंग द primarily woods and the other untamed area whenever there is access to the pasture. ये बेसिकली आपको कंसिडरेशन द हाई नंबर ऑफ एनिमल यहाँ पे देखने को मिल रही है, हाई नंबर ऑफ एनिमल एंड स्पेस नाउ यूज दिस pasture and the grazing sites insufficient and hemp pasture over the almost 1/3 of the reported area. हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटका की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, परसेंटेज रेंजिंग फ्रॉम द 4 to 10% इन द अदर एरिया ऑफ द नेशन.
एंड दिस प्रेशर फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, ये बेसिकली हमारे जो कृषि भूमि है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रभाव विस्तार कर रही है. लैंड यूज द एक्सप्लेन द फुल इन द acreage used for pasture and grazing. This loss is mostly caused by the unauthorized intention brought on by the increase of crop on the common pasture ground. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रुप्स के बारे में. यहाँ पे आपको बता दूं ये जो आपका लैंड यूज पैटर्न्स है जहाँ पे हम मिसलेनियस ट्रीज को देखने को मिल रही हैं हमारे धरातल में. जो वनस्पतियां है कई प्रकार के वनस्पति है और इसमें हम एक लैंड यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, लैंड यूटिलाइजेशन इज द मेजर लैंड यूज स्पेसिफिकली मेजर सब डिविजन ऑफ द रूरल लैंड यूज एंड सच एज द rain feed agriculture and such as the irrigated agriculture and such as the different land under the miscellaneous trees also, and all cultivable land that is used for the agriculture belt but is not include the net area planted including the land and under the miscellaneous trees and crops and groups. So this category include the land cover with the basically Kazurina जो trees है Kazurina trees and thatching the grass, bamboo, saps, various fuel groups also. So it is very important land there. Private sector ownership of this land predominates. Suppose there are the data according to 1950 to 51, and there are 4.46 million hectare, and 1960-61 4.29, and there are the little change, but Odisha has the largest area in this category, the following the Uttar Pradesh and Bihar and Karnataka, Andhra Pradesh, Assam, and Ala Tamil Nadu. And after that, turning points of this area under the miscellaneous trees crops. And so, culturable waste, make another their land use. The culturable wasteland, it is very important. And land use basically is sufficient by the economic and cultural and political and historical and basically land cover. On the other hand, it is one of the many biophysical attributes of the land affected how ecosystem function. So when you think the how ecosystem function, their cultivable wasteland is according to the wasteland survey and the reclamation committee. Cultivable waste refer to land that may be utilized for the cultivation but it is not for very a variety of the reason. Although this land was once utilized, it has since been abandoned due to obstacles such as the shortage of the water, salinity and salinity of the soil erosion, water logging, unfavorable physiographic sites, human neglect. And this category include the any land that have been follow and the more than 5 years. सो इस तरह जो लैंड है वेरियस अदर रीजन जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एज वेल एज द रा एंड आपका उषार एंड खोला डिस्ट्रिक्ट एंड अबाउट लगभग 36% अर्थात 36% इंडिया टोटल जो वेस्ट लैंड इन द राजस्थान एंड व्हार इज देयर इज द 4.3 लाख हेक्टर एंड अराउंड लैंड एंड गुजरात 43.6, मध्य प्रदेश 10.2, उत्तर प्रदेश 6.9, महाराष्ट्र 6.8, the other state significant culturable waste from around 22.9 billion hectare in 1950 and 99, almost they are changed at the 13.8. So there is the decrease, and after India gained independence, various land reclamation and program were implemented who is the contribute in the decrease in the wasteland. So this area should be used for afforestation rather than the crop farming, जहाँ पे धीरे धीरे पेड़ खत्म हो गए हैं और वहाँ पे ये फॉरेस्टेशन होना बहुत जरूरी है जो कि हो नहीं रहा है. ये एक बड़ी समस्या है जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए है. अगर आपका क्वालिटी सेटिंग डिस्प्ले क्वालिटी को बढ़ा लेंगे एडवांस सेटिंग में जाके. एंड वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड की अगर बात करें हैव सीन ए ड्रॉप थ्रू आउट टाइम एज प्रेशर ऑन द लैंड, जो कि बोथ आपका कृषि जमीन और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में फ्रॉम द बोथ द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर. किस लिए ना वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड हैव सीन ए ग्रुप हैव सीन ए ड्रॉप थ्रू आउट द टाइम एज ए प्रेशर ऑन द लैंड. इसको याद रखेंगे.
फेलो लैंड की अगर बात करें, फेलो लैंड को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, इसको याद रखेंगे। एक है आपका करेंट फेलो, दूसरा है फेलो अदर देन द करेंट फेलो। ये जो है आपका दो डिविजन, इसको आपको याद रखना है। बेसिकली फेलो लैंड क्या है, व्हाट इज द फेलो लैंड? फेलो लैंड बेसिकली ऑल द लैंड दैट वाज कल्टिवेटेड बट इट इज द currently uncultivable fellow fall under this category, and depending on the kind of soil and the other type of farming, and fallow land is yield the cultivated for the anywhere between 1 and 5 years to add in the soil natural recovery of this fertility. So it is very important. Current fellow for a year long fellow period referred to as a current fellow between 1950 to present time 2000, and there are the that is the currently fallowed spent 10.68 to 14.70 million hectare. So the state with the most current fallow land is Andhra Pradesh with the around 2.2 million hectare, and fallow in this 1.2 million hectare in Bihar, अगर बिहार की बात करें, एंड राजस्थान की बात करें 1.3 मिलियन हेक्टेयर जो है करंट फेलो राजस्थान में है। फॉलोइंग दिस कल्चरल कस्टम वी यूज्ड टू गिव the land time to reset, and natural process have the earth region, it is the fertility depending on the erratic nature of the rainfall and agriculture cycle. So it is very important, and follow other than the current fellow की अगर बात करें, ये cultivable for plot of the land that has been uncultivated for the longer than a year but less than the 5 year is also present। अर्थात ऐसा जगह है जो बहुत समय से 5 साल से यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, कल्टिवेटेड प्लॉट है लेकिन खेती नहीं हो रहा है, फेलो अदर देन द करेंट फेलो कहा जा रहा है। फेलो एरिया अदर देन दोज दैट आर करेंटली फॉलो फेलो हैज द सेपरेटली डिक्रीज फ्रॉम द 17.4 मिलियन हेक्टेयर टू 11.18 मिलियन हेक्टेयर। अर्थात हमें प्रोग्रेस करना होगा, हमें जगाना होगा यूथ को कि आप कृषि कीजिए, आप अपना गांव में कृषि कीजिए, फार्म हाउस को डेवलप करें ताकि हम इसको बचा सके। राजस्थान की बात करें, राजस्थान हैज द बिगेस्ट एरिया ऑफ द फेलो लैंड एंड अदर देन द प्रेजेंट फेलो एंड ओवर 1.7 मिलियन हेक्टेयर, and follow the Andhra Pradesh at the 1.5 million hectare, and other to boost the agriculture production, the amount frequency of the fallow land must be reduced, and this can be achieved also, and appropriate फर्टिलाइजर डोज, इरिगेशन फैसिलिटी, आपका खेती के सामान की फैसिलिटी, सीड्स के फैसिलिटीज, लेबर के फर्टिलिटी, क्रॉप रोटेशन एंड कम्बिनेशन एंड वेरियस अदर comparable farming practice is very important. Basically crop rotation, irrigation facility and various other कंपेरेबल फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्स के जो रिसोर्सेज है फॉरेस्ट के जंगल के, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या फॉरेस्ट रिसोर्स, क्या क्या संसाधन जो है वो किन काम में आ रही हैं। इन द एडिशनल देयर आर द क्रूशियल फंक्शन ऑफ द हैबिट एंड एनवायरनमेंट regulator in the natural ecosystem. Forest offer the variety of advantage to the human community, and these advantages are frequently referred to as the resource and that people can use for wood, fuel and other industrial and commercial and recreational use also. And effort to conserve the forest have been greatly added by the belief that woods provide human with resource, and government organization basically government organization when there are the different strategy and take the different strategy, business for the community development and resource management have the emerge as a result of increasing awareness of the advantage of forest basically, and for the human among the government and the general public in India and around the world also, it is very important. And the goal of forest resource, अगर goal of forest resource की बात करें, management is the drop to the droplet safeguard and the average the many resource found in the forest through the professional stewardship, and this improve the public welfare who is assuring the long term sustainability and conservation. This is the resource, and forests are valuable resource, the renewable energy, the economic
prosperity of the every nation benefit, and also their plant additional trees, and there are the goods, feeds, living things, and there are only 3% area under the forest cover. India forest cover account for 21.67 total geographical area अकॉर्डिंग टू 2019, जो कि 21.67 भी बहुत होते हैं आज के दिन में, मॉडर्नाइजेशन के दिन में, जो कि दिन के दिन अर्बनाइजेशन इतना बढ़ रही है। हम यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी जो है आपको याद रखना है फॉरेस्ट रिसोर्स में। बेसिकली अगर हम क्लियर काटते जाए, प्लांट को काट रहा है, सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट दैट हैज cleared of the trees and clear the cutting can be destructive to the forest, and especially when the cycle of reforestation जो आपका is slow, and the process of winds and the water erosion make the deforested land, to the reforestation. And however it can also be a tool for the increasing biodiversity in the forest that have been protected from the forest fear for a long time. It is very important terminology. There are the डिफॉरेस्टेशन पहला नंबर टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, दूसरा नंबर इकोलॉजिकल सर्विस, तीसरा नंबर फॉरेस्ट मोनोकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी. द फोर कोर concept of this parameter. There are the first of all deforestation. It decrease the forest or area brought on by human activities, जो कि ये हो रही है. इकोलॉजिकल सर्विस की अगर बात करें, द एडवांटेज दैट healthy forest and ecosystem provide to the human category, human society, such as the clean air, stable soil and pure water की अगर बात करें. फॉरेस्ट मोनोकल्चर की अगर बात करें, it is the grown of the forest in which single species of the trees dominates and which lack the biological diversity needed to fend off disease and parasitic over the long run. सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, हैबिट दैट मेंटेन द हार्मोनी बिटवीन द एनवायरमेंटल डिपेंड एंड ह्यूमन नीड्स एंड एज वेल एज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर नीड्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, हम आज इस वीडियो में कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट में के बारे में, जैसे कि ग्रासेस इंक्लूडिंग द एलिफेंट ग्रासेस, आपका सवाई ग्रासेस एंड द भावर एंड द यूज ऑफ मेकअप पेपर. जो पेपर इंडस्ट्री है, घास का बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, जो कि हम फॉरेस्ट रीजन में पाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट के अंदर में है. प्राइमरी सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल की बात करें, जो ग्रास है ये कहाँ पे मिल रही है? द पेरिनियल ग्रास इज अ ग्रोन इन बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश. ह्यूज ग्रास रूट and used to make cooling the skin and save the grass in found on the bear slave on the South Himalayan trek. And there are the different people are enjoy with this land. And bamboo is a member of the grass family, and also it is the develop like a tree. बांस को जानते हैं, बेम्बो जो है ये एक घास के फैमिली के हैं, लेकिन ये ट्रीज जैसे बहुत बड़े सा दिखता है, डेवलप लाइक ए ट्रीज. एंड देयर आर more than 100 species, and they are allow the woody perennial and the water, and also the majority of their production is the produce in the economy state of the Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, आपका त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, other Andaman and Nicobar Island. Bamboo is often referred to as poor man's lumber. इसको याद रखेंगे, poor man lumber किसको बोला जाता है? ये बैम्बो को बोला जाता है. इज ऑफ्टन रेफर्ड टू ए पोर्ट्समैन, एंड सिंस इट इज द सेंस द अफोर्डेबल मटेरियल फॉर द वर्टिकल ऑफ यूजेस, एंड इंक्लूडिंग द कैथोड्स, फ्लोर्स, मैट्स, ये सब जो है आपका फॉरेस्ट रिसोर्स जो है ये काफी लाभदायक है. दूसरी हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में. यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट रिसोर्स में काफी इंपॉर्टेंट चीज है. अंडमान निकोबार में आइसलैंड जो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, मिजोरम, ऑल हैव एक्सटेंशन जो कैन ग्रोथ, एंड दिस आर सम ऑफ द इंडिया बिगेस्ट कैन प्रोड्यूसर. ये आपका इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा. और कैन में ऑल्सो बी ग्रोन इन द सम एरिया ऑफ द आसाम, वेस्ट बंगाल एंड केरला, तमिलनाडु, झारखंड. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड टेंट्स एंड डाइस, इसके बारे में बताना है कि प्लांट जो है, टिश्यूज जो है, बेसिकली सीक्रेट ट्रेनिंग एज ए बायो प्रोडक्ट्स, द लेदर business makers of the training materials also,
and some of the important days are derived from the rate and sender bride rate एंड खैर जो है चॉकलेट जो है आपका फ्लावर्स ऑफ पलस पलस की जो है एंड फ्रूट ऑफ मेलोटा आपका मोल्टास फिलीपाइंस ब्रेकअप ओटल कई सारा अलग अलग आपका मोरिंडा टिंक टोरिया ऐसे इस तरह बहुत सारा जो है आपको पाया जाता है। मैनग्रोव की अगर बात करें आंवला मैंगो ओक हेमलॉक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत यूज है बाबुल के एंड द सवाना एरिया साम इंडिया प्रोड्यूस ओवर द 2 लाख टन्स ऑफ द एंड डेज एनुअली। ये बेसिकली अगर आप इसको सिस्टमेटिकली जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है लिस्ट बना लेंगे ताकि आपको याद रहेगा कि इसमें क्या बोलना है। ऑयल्स की बात करें ऑयल आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द संदाउलूट एंड लेमन ग्रास एंड खूस एंड आपका यू केलिपोटास जो है पेड़ है एंड दे आर यूज्ड फॉर सोप एंड कॉस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंसरी जो आपका फर्मा है वो सब इसमें देखने को मिल रही है। गाम की अगर बात करें गाम या रेजेंस जो है gum is related from the stream or other section of the various trees various way and some natural occurring the some result of damage of wood and bank caused by the flaming the trees basically the main producer are the madhya pradesh महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और उसी के साथ आपका टेक्सटाइल एंड कॉस्मेटिक जो है ये आपको लिखना है एंड अदर सप्लाई जैसे कि यूके में सप्लाई हो रही है आपका फ्रांस में एंड अदर यूएसए में। चीर पाइन की अगर बात करें चीर पाइन की जो बात है चीर पाइन हु इज ग्रो इन द हिमालयन रीजन अराउंड द उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड and there are the cute resin make up two main components there resin and solid also and there are the resin is an important raw material for several industries of who is the paper who is the plant and the varnish soap rubber waterproofing and linoleum oil grass ये जो है इसको आपको रखना होगा। फाइबर एंड फोजिल की अगर बात करें फ्लोसिस और फाइबर the tissue of the some trees can be used to make the fibers टिश्यू को कई सारा पेड़ का फाइबर में यूज होता है। the majority of these leaves are coarse and used to make a rope and however it is a fine study to silky fabric also। ये आपको याद रखना है कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स है। अगर हम लीव्स को देखें इस पेड़ का तो यहाँ पे वेरियस लीव्स वेरिएशन जो है आर गेदर्ड फ्रॉम द trees and use the various reason tendu आपका most intelligent example because they use as a वीडियो अर्पिंग। सो जहाँ पे लीव्स के जो गाछ के पत्ता है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कई लोग स्मोकिंग करते हैं बीड़ी खाते रहते हैं सिगरेट खाते रहते हैं तो यहाँ पे जो वीडियो वर्पिंग है वो लीव्स के पत्ता को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार महाराष्ट्र गुजरात की बात करें राजस्थान की बात करें कर्नाटक की बात करें देयर आर द तेंदू ट्री तेंदू जो पत्ता है तेंदू इज द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्रोडक्शन लगभग 6 लाख टन तेंदू लीव्स इच ईयर हर एक वर्ष में 6 लाख टन के तेंदू पत्ता जो है वो बिक रहा है। और जहाँ पे काफी दिख रहा है वहाँ स्टेट वाइज तेलंगाना की बात करें आंध्र प्रदेश की बात करें महाराष्ट्र की बात करें गुजरात की बात करें जो है सब आगे देखने को मिल रहे हैं। सब क्वांटिटी ऑफ द लीव्स की अगर बात करें इन ऑल्सो प्रोसीड्योर इन राजस्थान आपका कर्नाटका एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल आपका तेंदू लीव्स एंड देयर आर beads are exported to the Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and some other Asian country. So यहाँ पे drugs की अगर बात करें species and the position, the various selection of the plant can be used to make the drug. The most cultural medicine is required to the cardamom जो है इलायची and आपका cinnamon are the few expensive of the species जो कि बहुत दाम है आप जानते हैं। और यहाँ पे इलायची के रेट आप तो जानते हैं। सम पॉइजन such as the steaming and the of the aconite आपका डाटूरा आपका गांजा have the medical value when used in the teeny frequent basically dose and edible product की अगर बात करें फ्रूट फ्लावर लीव्स और रूट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एनिमल प्रोडक्ट्स का अगर बात करें यहाँ पे
The most significant annual product varied from the Indian woods is the produced by the teeny insect that feed on shape of numerous different trees, such as the including palas, आपका पीपल, कुसुम एंड अदर जो प्लांट है. सो झारखंड 40%, छत्तीसगढ़ 30%, वेस्ट बंगाल 50%, महाराष्ट्र 5%, गुजरात, इस तरह जो है यहाँ पे हमें large portion of the rain and the which help to restrict the flow of the water and prevent the flow goods by the service as well rain banker and their keeper. So it is very important. And food control की अगर बात करें, the roots of trees hold and bank rainwater by the absorbing a large number of it, and which help to control the flood by the regulating India flow. And these also operate as a barrage of countries and of communities them and control the flow of वाटर. ये वेरी इंटरेस्टिंग है. ये कुछ मैं नोट्स के साथ आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको नोट्स, पीजी के नोट्स बनाने या किसी को बनाने में आपको दिक्कत ना हो. चेक ऑन द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट की अगर बात करें, जहां पे स्ट्रॉन्ग विंड की जरूरत होते हैं एंड डेजर्ट कैरी एंड द सैंड पार्टिकल्स अक्रॉस द ग्रेट डिस्टेंस and causing the proliferation desert roots and the bind and the sand practice and the sand practical are bound by the resource of trees and plants, and which prevention the increase of the soil fertility. अगर बात करें बेसिकली यहाँ पे sand particles जो कि after decomposing the trees leaves that have fallen to the ground give the humus to the soil, and as a result trees contribute to increase the soil fertility. Plant fallen and leaves there are the all phenomena, and increase of the soil fertility definitely it is a big issue for us. And also the effect of climate. ये जो कुछ चीज है आपको, जिन लोग यूपीएससी देने जा रहे हैं, पीएससी देंगे तो थोड़ी सी ध्यान से इसको सुनेंगे. इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट जो है बाय डिसेंडिंग द हीट ऑफ द समर and the old in the winter and forest moderate, this is the extreme of the climate. By bringing down the temperature, most of the moisture leading winds are rising the relative humidity. Through transmission they also affect on the amount of rainfall. They slow the evaporation process and the lower the surface velocity of the wind. So it is very important. There are the problem of Indian forestry. क्या भारत के फॉरेस्ट्री में, वनस्पति में क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है. वेरी इंटरेस्टिंग ये है आपको. पहला इनएडिक्वेट एंड द dwindling forest cover, low productivity, nature and forest, lack of transport facility, plant disease, insect and pest, आपको obstacle method and lumbering and swaning, a lack of commercial forest, lack of scientific techniques, and बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट ऑन डैम ऑन द फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल. जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे हमारे भारत में, जो फॉरेस्ट है, जंगल एरिया है, वहां पे किस किस तरह यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. अगली हम स्लाइड में बताएंगे इनएडिक्वेट एंड ड्वेलिंग फॉरेस्ट कवर, जो कि sufficient and rapidly declined forest cover is the main use with the Indian forest as well already established, but just 2.0% of the area are covered by forest, and which is below the needed 33%. The use of forest land for purpose other than the afforestation effectively negative a major portion of the of our gain from the afforestation. ये बेसिकली हमने नोट्स की तरह आपके सामने रखा ताकि आप इसी को लिखे, इसी को पढ़े, हर चीज को जान जाएंगे. लो प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, जो भारत में जो प्लांटेशन हो रही है, यहाँ पे कहीं पे अच्छा हो रही है, कहीं पे जो है लो हो रही है. तो इंडिया वुडलैंड आर मच लेस प्रोडक्टिव देन द दोज सेवरल अदर नेशन, and also for the instance an Indian forest only proper 0.5 cube meter of the wood and per hectare annually compared to 1.25 and cubic to USA में 1.8 cubic meter and Japan में 3.9 cubic meter in the France.
सो यहाँ पे नेचुरल एंड यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, अदर जो अन इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन है इन द मेनी पार्ट ऑफ द नेशन, द फैक्टर आर डिजाइन डिफिकल्टी टू एक्सेस, slowly expanding and lacking in the Guria stands basically, and some often the just made of the thorny plants and other very thin. कहीं पे हम एकदम पतला प्लांट देखने को मिल रहा है, कहीं पे मोटा प्लांट देखने को मिल रहा है, कहीं हेल्दी प्लांट देखने, बेसिकली लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. The absence of adequate infrastructure is on the greatest issue the Indian woods are generally facing. India over 60% जो है of the forest land in increasable, and the lack of adequate transforming the infrastructure and the main output of the woods, which must be keep in the mind lumber and which are the cheap and health good, and as a result it cannot afford the high freight rate fit the आपका train and road. So it is very interesting, and unfortunately India railway only provide the surface and to dense inhabitants area. They are the little used to forest, and there is a several paucity of the all weather road in the in the forested area. So it is the lack of gap, and forest fire is the very important for this topic. Large tracts of the vegetal cover are destroyed every year by the forest fire. So forest fire is India are the most destructive in the dry region season, and insufficient of properly trained and personnel is being happened. So another issue, the plant disease are insect and pest. It is very interesting. There are the प्लांट डिजीज यहाँ पे जो आपको बताऊं, प्लांट में बहुत प्रकार के डिजीज देखने को मिल रही है. इंसेक्ट आ रही है, जो कि इंसेक्ट भी आजकल जा नहीं रहा अचानक. एंड पेस्ट जो है आफ्टर द लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट कवर, देयर आर द ग्रेजुअली रिगार्डिंग द रिचेस ऑफ द फॉरेस्ट. एंड फॉर इंस्टेंट दैट साल बड़ा जो है इज जनरली and throughout the stand, and the Chhattisgarh has the preventive measurements have been taken. Other to collect and eliminate the insect forest official on the only employing the crowd means such as recruiting the tribal people also. यहाँ पे ऑब्सोल्यूट द मेथड ऑफ द लंबरिंग की अगर बात करें, यहाँ पे मेथड कुछ है जो कि हमें याद रखना होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट still use the antiquate techniques for the having wood separate seeds. यहाँ पे लकड़ियों का और सीडों का जो है उसमें चाहिए. एंड लो फॉरेस्ट जो प्रोडक्टिविटी है रिसोर्स के रिजल्ट के ऑफ दिस अप्रोच, एंड सिग्निफिकेंट वेस्ट आर द result of this approach. A large amount of the sulfur timber that may be better and utilized by the seasoning and presentation treatment and land area also. So lack of commercial factor is very important, जहाँ पे भारत के मेजर जो वनस्पतियां है यूज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, एंड देयर आर द एवरी commercial forest, and growing concern about the environment deterioration has compiled as the view of wealth of the forest, as well the promoter, as well the scientific forest growing the method, and also although in the many industrialized nation and innovated scientific method are employed to यहाँ पे आपका जो देखने को मिल रही है स्टेप बाय स्टेप डेवलप मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में. मेनी ट्रेस दैट हैव द स्ट्रक्चर बिफोर और आर मेंबर ऑफ द स्पेसिफिक एरिया जो है आपका डेट के साथ याद रखना है. अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्राइबल एंड लोकल पीपल की अगर बात करें, जो कि ट्राइबल एंड लोकल पीपल हैव गेन्ड द customary rights and occasion for the free gazing in the large forest आपका आपका tracts, as well as for the removal time timber fuel minor forest product. ये सारी चीज जो है आपको यहाँ पे देना होगा. यहाँ पे जो लोग नेट दे रहा है, ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरनेट में ये नोट्स नहीं मिलेगी. दे आर ऑल्सो परमानेंट permitted to keep up their आपका centuries
old shifting farming, the yield of the forest has decreases as a result of this action. So it is very important. There additionally फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अगर बात करें, जहां पे हमें एफॉरेस्टेशन में जोर देना होगा, जहां पे प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज, आपको प्लांटेशन करना है, आपको यहाँ पे मैंने एक एक चीज बोल रहा हूँ, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज, फॉरेस्ट एनहांसमेंट की बात करें, या अल्टरनेटिव फ्यूल के सोर्स की अगर बात करें, ये चार ऑप्शन को आपको मैं समझाना चाहूंगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अगर करना है तो हमें सबसे पहला काम की जो खाली जमीन है उस पर प्लांट कीजिए, ये फॉरेस्टेशन कीजिए। And intensive project that have a focus on fuel wood, lumber, grasses, and most of the started along the highway and railroad track also, river, pond, trees, and planting for of trees जो है on the public ground, the creation the community forest on the gram sabha property and the other development, the greenhouse urban area, and that is very important. And forest encounter and the engagement जो है by agriculture should be criminalized, and in the same vein the terrace farming and orchard developing and other silviculture should be gradually replace shifting corporating जो है। and although there are the all यहाँ पे जो है आपको ऑल्टरनेटिव फ्यूल के जो सोर्स है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल के सोर्स के बारे में हम बताएंगे। ये शुड बी मेड अवेलेबल बाय द रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें, ऑफ द लैंड शुड नॉट बी अलाउ द एग्जिस्टिंग बाय द कस्टमरी राइट्स जो है। ये कई लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव फ्यूल जो सोर्स है ये सही से मैनेज नहीं होती है। एंड प्लानिंग शुड बी done to ensure the environmental and the forest damage is give it the minimum when the mining operation is finished. And next point में आप बात करेंगे, इंडस्ट्री नीड टू इम्प्लीमेंट एंटी पॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें, यहाँ पे रेगुलेशन आपका कंजर्वेशन की बात करें, शुड इन्वॉल्व द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द ट्राइबल एंड लोकल रेसिस्टेंस। द वन महोत्सव शुड हैव बी promoted and the people should be made aware of the chipko movement, and also forest fear illness and the pest and should be inspired should be inspected for the content using the scientific procedure. So it is the naturally cultivation of the झूम की अगर बात करें, कुछ जो डिस्टर्बेंस एरिया जो है जैसे कि झूम चाष कल्टीवेशन, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बताऊंगा, क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ झूम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन का है और उड़ीसा के है। एंड कल्टीवेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैज द डाइवर्स्टेड लार्ज एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट। ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पे एक लार्ज अमाउंट फॉरेस्ट को जो है वो विनाश कर रही है, वन काटते हैं, काम करते हैं, किसी करते हैं, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो झूम एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन द सब्सिडेंस एग्रीकल्चर, इट इज द clearing and the cultivation as the section of forest land, and after a few years as the land productivity starts to decline, the cultivator give up the clear the following the tract also. And this approach basically cause the rapid deforestation basically, and more cultivator clear the forest to cultivate the land, and especially when combination with the growing population. And additionally, as a result of the population growth and the farmers required to return on the prior agriculture trace more frequently, which prevent the land from recovering and its productivity. So ये नोट्स आपके इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आप नोट्स बनाने में आप आसानी से बना ले, क्योंकि बहुत लोगों के पास मटेरियल नहीं रहते और अच्छा मटेरियल के ना होने के कारण नंबर कम आ जाते हैं। तो परीक्षा के कॉपी के लिए आपके ये जो स्कीम चल रहा है यहाँ पे आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। चिपको मूवमेंट ऑल्सो आप जानते होंगे, बहुत लोग चिपको आंदोलन भी बोलते हैं इसको, और वाज द सोशल एनवायरमेंटल मूवमेंट है ये, और इसमें गांधी जो सत्याग्रह जो है एंड नॉन वायलेंस रेसिस्टेंट टेक्निक्स के बारे में आपको लिखना है। एम्ब्रेंड द ट्रीज टू स्टॉप देम टू बीइंग काट डाउन, पेड़ काटने में उन्होंने माना किए थे, और जो गांधीयन कॉन्सेप्ट के साथ चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और उन्होंने कर रहा है। द कंटेम्पोररी चिपको मूवमेंट बिगन इन द गढ़वाल हिमालय ऑफ उत्तराखंड इन द अर्ली 1970 में। अवेयरनेस ऑफ रैपिड डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज
And March 2016, 74 group of present women in the Rainy village and Hemwal घाटी इन द चंबोली डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड इंडिया, ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे आपका ये जो है स्प्रेड हुई थी। और बाय द एंड ऑफ 1980 द मूवमेंट दैट एक्सटेंड ओवर द एंटर कंट्री ऑफ इंडिया which promoted the creation of the people sensitive forest law and that evident open the cutting area, they are Vindhyans and Western Ghat. So वेस्टर्न घाट हिमालय भी वन ऑफ अनदर पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न द हिमालय जो है आपका बेसिकली यहाँ पे हैव बीन सर्विस द डिग्रेडेशन some their issue of the environment issue, and this has led to number of issue including the tough soil, including the erosion, erratic soil, rainfall soil, shifting soil, and additional to the compassing there are the stability, there are the highway built on the sloping and the extensive trees cutting also tribes and the stage of variety also। एंड ये जो आज के हमारा वीडियो में लैंड रिसोर्स और हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स के जो वीडियो था, हमने कोशिश किया ताकि नोट्स के साथ आपको बताने, क्योंकि हमारे चैनल में वो वीडियो है कई प्रकार के, कई बार कमेंट आए सर मुझे नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए, तो टोटली जो बेस्ड ऑन द नोट्स जो है होते हैं उसी को हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि कैसे हम नोट्स के जरिए में और उसके जरिए में जो हमने अच्छा से इसको प्रेजेंट कर सके, अच्छा से उसको हमने दिखा सके। तो आज इस वीडियो में हमने लैंड यूटिलाइजेशन जो कि उसके बारे में आपको बताया कि लैंड यूज इज द इन्फ्लुएंस बाय द इकोनॉमी एंड बेसिकली कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड लैंडेजर फैक्टर जो मल्टीपर्पज स्केल है हमारे भारत में जो विकास की गति है, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करें तब हमारे देश में विकास होगी। अगर हम लैंड यूज पैटर्न के जो मैंने वीडियो में क्लास में सारी डिटेल आपको हमने बताया, यहाँ पे बेसिकली आपको प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए, जो कि अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे देश कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो आज इस वीडियो में लैंड रिसोर्स और उसके साथ हमने यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में भी आपको चर्चा किया, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, ताकि इस तरह भारत के जो भूगोल है और कुछ मानचित्र के साथ आपके सामने हम रखेंगे। थैंक यू टू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में, अर्थात